गुड इवनिंग फ्रेंड, स्टडी विद पाला इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी परवीन सिंह बुक। तो हम लोग चैप्टर 15 पर हैं। इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट्स चैप्टर है और उसके तहत अब हम कोल का पढ़ चुके हैं। कोल अकरेंस क्या है, उसका इंडियन अकरेंस क्या है और कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे टाइप है। अब है पेट्रोलियम का। तो डेफिनेशन से पेट्रोलियम इज अ जनरल टर्म्स अप्लाइड टू अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये कोल और पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंडिया अकरेंस, अगर वर्ल्ड की अकरेंस कर लें तो और भी बेहतर है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से रीड केयरफुली खुद से भी करिए और एक बार देख लीजिए। तो पेट्रोलियम इज अ जनरल टर्म्स अप्लाइड टू अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड some others compounds that occur in a liquid forms entrapped within the rocks of the surface of the earth. It is also termed as mineral oils and crude oil. The crude oils may be colorless or various shades of green or even black. It may have a typically petrol-like smells and rotten egg odor. Chemical composition. So crude oil is chiefly a complex mixture of hydrocarbons which occur in an isomeric combinations, that is in interrelated forms. The main hydrocarbons that constitute crude belong to paraffins, methanes, ethane, propane, butane, naphthanes. Series are aromatics hydrocarbons. Besides hydrocarbons, small quantity of compounds of sulfur, example thiophene and thioether, and mercaptanes and nitrogens and oxygens are also present in varying property. In some cases, the traces of metallic element like vanadium and nickels are also found in crude. The natural gas which is often associated with the petroleum deposit is made up of gaseous hydrocarbons of the paraffin group mentioned above. Besides, with an admixture of low boiling liquid hydrocarbons like pentanes and hexanes, crude oils on distillations yield petroproducts of varieties of types, each having an important applications. Aviation fuels, petrol, diesel and kerosene oil are only the most commonly known fractions of a crude oil. अगर मेरी ये बुक जल्दी कंप्लीट हो गई तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट का पेपर होता है यूपीएससी कराती है सिलेबस लेकर के, अभी नहीं कुछ दिन बाद, तो मैं उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार फिर से टॉपिक करवाऊंगी। वो खुद से बुक के नोट्स लिए और थोड़ा सा खुद राइट किया। मैं बुक से ही बनाऊंगी, कोई अपना सेल्फ ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये बेसिक है कि आप उसमें कोई कविता नहीं डाल सकते हैं। आप उसका बुक से उठाएंगे, हम जैसे कुछ इंटरनेट पे मिल जाएंगे टॉपिक और कुछ बुक के बेसिक तो बुक का ही मिलाना, क्योंकि कई बार इंटरनेट पे गलत इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरे पास बुक्स हैं बहुत अच्छी, तो मैं उससे लेकर के और उसके नोट्स बना के आपको फिर उसके बारे में समझाऊंगी। लेकिन अभी ये नहीं हो पाएगा जब तक बुक नहीं कंप्लीट होगी, ठीक है। कोशिश करती हूँ मैं। Origin of petroleum से any attempts to explain the formation of oil within the earth must satisfactory answer a few। और अभी जैसे आप लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और उसमें डीएस लाल की हेल्प लीजिएगा और सविंद्र सिंह की क्लाइमेटोलॉजी से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और इनको अगर कर लेंगे तो आपको जैसे प्री एग्ज़ाम दिया उसमें मेन है तो क्या है, जैसे डिटेल क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव में तो परवीन सिंह, जीबी महापात्रा हैं, आपकी बांगर हैं, ये बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव कर देती हैं क्वालिफाइड। लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं तो ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, तो इनके लिए इनकी हेल्प चाहिए ही पड़ेगी, ठीक है। चूँकि मैंने भी नेट किया था, अब बहुत टाइम हो गया, 2009 का है, 2009, अब 2009 से 2023 में बैठे हैं हम, बहुत टाइम होता है।
Any attempts to explain the formation of oils within the earth must satisfactorily answer a few most vital questions are involved in the problems. These are the nature of the source materials. और हाँ, आपको एक और बात बताना चाहूँगी, मैंने गेट भी किया था, लेकिन सबसे पहले गेट किया था क्योंकि मैं M.Sc की होती तो मेरे लिए गेट का कोई ऑप्शन नहीं लगा कि मैं फिर से M.Tec करूँ, तो मैंने M.Tec नहीं किया, मैंने फिर सीधे नेट किया। अब नेट के बाद में कुछ रीज़न रहे जिसकी वजह से मैं अभी वो काम डिले रहा मेरा। तो अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ जैसे स्टूडेंट है जिनको हिंदी मीडियम के ख़ासतौर से अगर वो सब्जेक्ट लेते हैं, उन्हें पसंद भी होता है लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो वो छोड़ देते हैं, जबकि मैं कहूँगी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप वाला है और बहुत ही बढ़िया है अदर जॉब की अपेक्षा। फ्री माइंड आपको विजिट मिलती है करने को, सबसे बड़ी बात है, नेचर से कांटेक्ट होने को मिलता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पर। एनी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल विद इन द अर्थ मस्ट सेटिस्फैक्टरली आंसर अ फ्यू मोस्ट विटल क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम। दीज आर द नेचर ऑफ द सोर्स मटेरियल, the process that resulted into the transformation of source materials to the crude oil, the environment that controls such a transformation, the migrations of the oils from the place of actual likely formations to the present occurrence and also the कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन। ये जैसे इसमें बुक में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के आंसर जैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल अगर ऐसे ही आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। It may be mentioned that crudes from snow to oils fields have the same chemical compositions. In many theories have so far been forward to explain the origin of oils, but no single theory seems relevant to also the aspect of oil formation. The sum and substances of a prevalent view regarding the origin of oil is given below in Mar's outlines. The readers is referred to specialized literatures on oil for a deeper insight to this interesting subject. Let us aspect a basic fact: without oil's life would comes to a grinding halt in this modern age in one day. Source material. Two general views have been expressed. In the first, oil is regarded as having been derived in the nature and from an inorganic source, whereas in the second, essentially the organic matter is believed to be the source of oil. And the first view is summarized under inorganic theories. Inorganic theories suggest various possibilities like reactions of alkali metals which are common in the interior of the earth with carbon dioxide forming acetylides that combines with waters to form hydrocarbons. Reaction of iron carbides with percolating waters that at a very high temperature and pressures that leads to the formation of hydrocarbons. To FeC, place iron carbides and plus 3H2 water molecules and make a Fe2OCO3. So C2H6 means है हाइड्रोकार्बन से ये बन रहे हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्मिक हाइड्रोकार्बन्स that excited in the beginnings of the earth when it was still in our astral state, followed by their absorptions by substratums on coolings of the earth and subsequent concentration in the coolest layer of the lithosphere. Decompositions of the terrestrial waters that percolated down into the body of the earth by radioactive and other sources into hydrogen and oxygen and combinations of hydrogen so formed with carbon of magma rich in that gas. There are many objections to each of the above and others similar views based on inorganic sources. One of the most vital objections is that petroleum occurs in sedimentary formation and none of the above reaction is possible in environment of sedimentations. Organic theories.
These forms the journal is accepted views regarding the parent materials of the oils. All such theories suggest an easily essentially organic nature. For the source materials of petroleum, sufficient evidences exist to prove that there have been huge accumulations of organic matter, both of vegetables and animals kingdoms. In geological times, from these accumulations, oil was formed as a result of bacteria and chemical decomposition. As regard the exact natures of the organic materials, evidence suggests that most of the oil deposits have a source of sapropellic pollens, lower plants, planktons, nature, and though in some cases a source of lower animals is not ruled out. Transformation. It is commonly accepted that the organic source materials of either types is transformed into oils like liquid through a set of stages. In the first stage, the carbon-rich organic remains collected over long geological times undergo biochemical decomposition through the agency of microorganisms. This change may result in conversion of original mass into thick, heavier bituminous substance that subsides under its own weight to lower zones of a higher temperature and higher pressure. The bituminous materials undergoes activated degradations in an oxygen-free environment result in conversions of original mass into thick, heavier and bituminous substance that subsides under its own weight to lower zones of higher temperature and higher pressure. The bituminous material undergoes activated degradations in an oxygen-free environment resulting in the liquid, gaseous and solid fractions of hydrocarbons. Some thinkers suggest a roles of radioactive heat in effective polymerizations of hydrocarbons at this stage. The sequence of reactions postulated is beyond the scope of this book and has also its shortcomings. Nevertheless, some change do take place under the influence of microorganic activity. That case, the decomposition of the original organic source into materials from which petroleum gets naturally synthesized. Thank you. Please like and support it. Thank you.